Hello everyone, a very good evening to all of you. Hello, good evening everyone. I hope I'm audible. Yes, please. So can you please let me know if I'm audible? If you're able to hear me, if you can listen to me. Alright, so today's topic is we are going to talk about examination of witnesses. आज हम examination of witnesses के बारे में बात करेंगे. छोटा सा डिस्कशन है आज का हमारा. ऑलराइट, बट उससे पहले आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं. इफ़ यू कैन हियर मी, इफ़ यू कैन सी मी. ऑलराइट, सी वैसे तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है. सो चैप्टर 10 basically talks about your chapter 10 is of your examination of the examination of witnesses. but उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी. I just want to ask you a question. so what is your opinion? Do we have like in the court, क्या कोर्ट में आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस करने होते हैं? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको इतने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए? ये मेरा सवाल है आपसे. क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको इतने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए? इज इट रिटन एनीवेयर? ऑलराइट, बताइए ज़रा, क्या कहीं ये लिखा है? येस, नो, कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं है. No, it's not written, right? It is not written anywhere that you need to have a fixed number of witnesses. And is it provided anywhere? So when you read section 134 of your Indian Evidence Act, so it says that no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact. Alright? So no. What does it say? It says no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact. एक particular fact को prove करने के लिए it is not required that you need to have any number of witnesses. Alright, it can be proved if the witness is strong enough. अगर उसके टेस्टिमनी पे रिलाई किया जा सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे रिलाई किया जा सकता है, so even one witness can prove a fact. बट अगर विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे या टेस्टिमनी पे रिलाई नहीं किया जा सकता है देन इवन इफ यू प्रोड्यूस 20 विटनेसेस दे आर नॉट गोइंग टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर नो फिक्स्ड नंबर ऑफ विटनेसेस. सेक्शन 134 टॉक्स अबाउट दैट. नाउ चैप्टर 10, व्हेन यू डील विद चैप्टर 10, सो चैप्टर 10 इज बेसिकली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट चैप्टर 10 इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट. एंड चैप्टर 10 में सेक्शंस कितने हैं? तो अगर आप देखेंगे, इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट सेक्शन एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू द कंटेंट सेक्शन, सो यू विल फाइंड दैट चैप्टर 10, कितने वैसे चैप्टर हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में? देयर आर 11 चैप्टर्स, राइट? सो चैप्टर 10 इज द लास्ट चैप्टर. सो जस्ट अ सेकेंड. सो चैप्टर 10 हैज़ प्रोविजंस from section 135 to 166. ठीक है, 135 to 166 बेसिकली जो है वो क्या है? वो चैप्टर 10 के प्रोविजंस हैं. ऑलराइट, वो चैप्टर 10 के प्रोविजंस हैं. ठीक है, क्लियर? सो वो जो चैप्टर 10 है दैट इज ऑफ द examination of witnesses. Now when you read the very first, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, so I am not going to do all the sections today over here,
but few important provisions. At least we will know what is examination, what is cross examination, what is the order in which it has to be done, what do we mean by re-examination, what are leading questions, what are not included in leading questions, and all these things we will be talking about. Alright, okay, so when you read section 135, जब हम section 135 पढ़ते हैं, so section 135 talks about कि what is the order and production of examination of witnesses. तो क्या कोई order and production of examination of witnesses है? अगर हम witnesses को present कर रहे हैं तो क्या witnesses को present करने का कोई order है, ठीक है, या उनको एग्जामिन करने का, witnesses को एग्जामिन करने का कोई ऑर्डर है? सो लेट्स सी व्हाट इज सेक्शन 135 सेइंग कि अगर हमारे पास 3 विटनेसेस हैं या 4 विटनेसेस हैं तो क्या हमें उन्हें किसी ऑर्डर में प्रेजेंट करना है? ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज सेक्शन 135 सेइंग. So section 135 basically talks about order of production and examination of witnesses. So the order in which witnesses are produced and examined shall be, the first thing is कि ये जो order है, order in which who the witnesses, alright, are produced. पहले तो आपको उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा ना, first they have to be produced and then examined. So produced and examined. ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहले एग्जामिन करेंगे फिर प्रोड्यूस करेंगे. So first they have to be produced and they will be examined. So the order in which the witnesses are to be produced and examined, alright, that shall be regulated by law. Shall be regulated by law. कौन रेगुलेट करेगा उसको? ऐसे ही नहीं, इट्स नॉट ऑन विम्स एंड कैप्रिस, ऑलराइट, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय लॉ. ठीक है, एंड प्रैक्टिस, लॉ एंड प्रैक्टिस, या तो लॉ या फिर कोई प्रैक्टिस जो फॉलो होती है फॉर द production and examination of those witnesses. So the order in which the witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively. जो भी civil and criminal procedure में practice, I'm just writing in civil and criminal procedure. Civil and criminal procedure. जो भी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर में लॉ एंड प्रैक्टिस फॉलो होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग, ऑलराइट, फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दीज विटनेसेस, सो इट इज दैट ऑर्डर विच इज टू बी फॉलोड. और अगर कोई लॉ नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, कि अगर कोई लॉ एंड प्रैक्टिस नहीं है सो कोर्ट जैसे चाहेगी आपको वैसे प्रेजेंट करना होगा. द वे द कोर्ट वांट्स इट टू बी प्रेजेंटेड, you will have to present it in the same manner. You will have to present it in the same manner. That is what section 135 is saying. Now, we are not going into 136 because it is about judge to decide as to admissibility of the evidence. So because, basically it is talking about admissibility of evidence. So I'm not dealing this today. Let's come to the next provision. What is section 137? अब examination होगा कैसे? ठीक, so the next question which is being asked is कि आपने production and order of production and examination तो समझ लिया कि भाई या तो जो law and practice होगा depending upon the criminal and the civil proceedings, या फिर जो है alright, whatever is the discretion of the court. बहुत अच्छी बात है. Now section 137 basically it talks about what is examination in chief, what is cross examination and what is re-examination. These are the 3 things which we need to know actually. Alright, examination in chief, alright, cross examination and re-examination. ठीक, कहाँ प्रोवाइडेड है? सेक्शन 137 में प्रोवाइडेड है, बिकॉज ऐसे ही एग्जामिनेशन होता है किसी विटनेस का. तो इफ द विटनेस इज योर ओन विटनेस, द विटनेस ऑफ द पार्टी, तो पहले उसका क्या होगा, पहले मैं बता देती हूँ फिर आई एक्सप्लेन दिस टू यू.
If that is your own witness, all right, so what will you do of that witness? The first thing that will be done is examination in chief, all right. Then adverse party उसका क्या करती है, opposite party उसका क्या करती है, वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करती है. क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त अगर कोई ऐसा फैक्ट सामने आता है जो कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो है वो बताया नहीं गया है या इट रिक्वायर्स फर्दर एलैबोरेशन, so the party which has called the witness, the same party, re-examines that witness. All right, so that is the order that is being followed: examination in chief, cross examination and re-examination. Now let's read what is section 137 saying. So section 137 says that the examination of a witness by the party who calls him shall be called as examination in chief. So who does examination in chief? Party who calls the witness. Party who calls the witness. Alright, that particular witness. So examination in chief is done by that party. Right? Clear? Examination in chief is done by that party. ठीक है, ये क्लियर है आपको? Okay. Now what is cross examination? Let's see that. What is cross examination? So cross examination is the examination of a witness, जो कि हमने अभी बात की थी, the examination of a witness by adverse party. Alright, we just talked about it. Examination of a witness by whom? By adverse party. By adverse party. ठीक है, that shall be called as what? That shall be called as cross examination. ठीक है, and what is re-examination? The examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re-examination. ठीक है, so re-examination happens when subsequent to cross examination. Subsequent to cross examination. By whom? By party who has called the witness. By party who called the witness. Alright, ठीक है. So ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि कौन करता है एग्जामिनेशन इन चीफ, कौन करता है क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कौन करता है री एग्जामिनेशन. ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये. आई एम ट्राइंग टू increase the slide. Can you see this, all of you? Just let me know, please. Can you see this? Now I think थोड़ा सा मुझे इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है. Yeah, I think now you can see it. बताइए. So आपके प्रिलिमिनरी में जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सेक्शन 137 से. ठीक है, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 137. ठीक, अब ऑर्डर सेक्शन 138 जो है, बेसिकली सेक्शन 138, इसे तो मैंने छोटा कर दिया है, अब आप इस पे ध्यान दीजिए. तो सेक्शन 138 ऑर्डर की बात करता है कि हाउ this order of examination in chief, cross examination and re-examination will happen. So witnesses, as I told you, first will be, what will happen? Examined in chief. Alright, the first thing that will happen is the witnesses will be examined in chief. Then what is going to happen next? So witnesses shall be first examined in chief. Then if the adverse party so desires, cross examination हमेशा mandatory नहीं होता. If the adverse party so desires, then there will happen cross examination. Alright, cross examination. If the adverse party wants to cross examine the witness, alright, and then if the party calling him so desires, again re-examination भी हमेशा नहीं होता. If the party calling so desires, party को लगता है कि further elaboration की ज़रूरत है, so then the re-examination will happen. Alright, now the next question which arises is, so cross examination किसके उस पे होता है, behest पे होता है, if the
adverse party, I'm just writing ADV, adverse party desires. Sorry. री एग्जामिनेशन किसके बेसिस पे होता है? ठीक है, पार्टी कॉलिंग डिजायर्स. Alright? Okay. Now, so what happens? What are the kind of questions or what are the kind of facts they are related to? किस fact तक ये limited रहते हैं? So then when you read the next para, it will say the examination and cross-examination must relate to relevant facts. जो examination and cross-examination है, that is examination in chief and cross-examination जो है, it must relate to what? These two, this and this. It must relate to relevant facts. It must relate to relevant facts. Alright, but ठीक है, but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप केवल उतने ही फैक्ट्स तक लिमिटेड रहेंगे जो कि विटनेस ने टेस्टिफाई किया है अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में. यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी लिमिट बढ़ जाती है. यू कैन आस्क other questions as well, although they are related to relevant facts. Alright, but you can ask other questions as well to which हो सकता है the witness might not have testified. So your limit is not to the extent of what witness has testified. ठीक है, what witness has testified in examination in chief, the limit is not to that extent. You can go forward. Alright, you can ask other questions as well to which witness has not testified, जिसको witness ने testify नहीं किया है, but definitely that is related to relevant fact. ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि although जो facts हैं, जो सवाल हैं, वो आपके relevant facts से related होने चाहिए, ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप केवल उतने ही फैक्ट्स जो है पूछेंगे जो कि विटनेस ने जो है वो टेस्टिफाई किया है, क्योंकि विटनेस तो अपने हिसाब से टेस्टिफाई करेगा. राइट, विटनेस जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो उसके हिसाब से टेस्टिफाई करेगा. सो जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप उससे फर्दर भी सवाल कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. राइट, ठीक है. नाउ डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन की बात कर रहा है 138 का थर्ड पैरा. नाउ व्हाट इज दैट? The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in the cross-examination. I already told you. अब यहाँ पे इस जगह पे आपने जितने भी सवाल पूछे हैं, ठीक हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की, we just now we talked about कि ये ज़रूरी नहीं है कि in case of cross-examination the questions will be limited to the facts to which the witness has testified. cross-examination में it is not necessary कि आप केवल उतने ही facts तक limited रहेंगे जो कि witness ने testify किया है. So while asking different questions, some facts might come out which need to be elaborated. अगर पार्टी ने उसको elaborate नहीं किया, so that can go against the party. So इसलिए जो है री एग्जामिनेशन ज़रूरी हो जाता है by the party who has called the witness. So whatever has been asked over here related to all these things, if further elaboration is required, then re-examination will be done by the party which has called the witness. So I'll just read. The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in the cross-examination. And if new matter, as I told you, अभी मैंने आपको बताया, if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter. अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते वक्त अगर कोई नया मैटर आ जाता है, न्यू मैटर आ जाता है री एग्जामिनेशन करते वक्त, क्योंकि री एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते वक्त अगर कोई नया मैटर आ जाता है, सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये जो एडवर्स पार्टी यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन कर रही है, ये फिर से इस न्यू मैटर पे क्रॉस एग्जामिन कर सकती है. सो फिर से इस न्यू मैटर का क्या होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन होगा.
Is it clear everyone? बात समझ में आ रही है? Is it clear to all of you? Are you able to understand? ठीक है. Now then, 139 is talking about a situation. 139 is talking about a specific situation, all right, where what about a person who has been just called to produce a document? कई बार आप ऐसा होता है कि आप कोर्ट में किसी अथॉरिटी के पास कोई डॉक्यूमेंट होती है एंड आप जस्ट कोर्ट में उसे बुलाते हैं वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए. So what about that person who has been called to produce a document? So section 139 basically talks about, it says that cross-examination of person called to produce a document. Alright, so a person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called upon as a witness. Simple सी बात है. Just because एक इंडिविजुअल को आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है उसके हाथ में, just because you have called a person to produce a document, this does not mean by virtue of producing a document he has become a witness. No, he does not become a witness unless and until, and he cannot be cross-examined because he is not a witness, so he cannot be cross-examined. All right, unless and until he is called as a witness. He is required to be called as a witness. If you call him as a witness, all right, just a second. If you call him as a witness, then yes, he can be cross-examined. All right, clear? That is what section 139 is saying. Then 140 is about witness as to character. ये आप section 153 के साथ, section 52, 53 के साथ एक बार पढ़ लीजिएगा. Now let's come to section 141. What is it? Section 141 is talking about leading questions. Now what are leading questions? तो हमें 141, 142 and 143 करना है, ठीक है, for today. So what are leading questions? And when they may be asked. So पहले हम 141 के साथ 143 करेंगे कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और हम इन्हें कब पूछ सकते हैं. So 141 ये कहता है कि any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called leading question. अभी मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, सॉरी. लीडिंग क्या है? The word itself says that you lead a person to answer a particular thing. आप चाहते हो कि सामने वाला क्या आंसर दे या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये आंसर दे, तो आप उससे सवाल इस तरीके से पूछते हो कि आप वो जो है आपको वही जवाब दे. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कोई जो है एक स्टूडेंट है जो कि देहरादून में पढ़ता है किसी कॉलेज में, तो आप उससे पूछोगे कि अच्छा तुम क्या इस देहरादून के इस कॉलेज में पढ़ते हो, तो सारा जवाब आपने खुद दे दिया. आप बस चाहते हैं कि वो या तो हाँ बोले या तो ना बोले, राइट. सो व्हाट इज, एंड आपके दिमाग में है जवाब, आप जो उससे जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको लीड कर रहे हैं उस आंसर की तरफ. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चन. ऑलराइट, यू लीड द पर्सन टू गिव अ पर्टिकुलर आंसर which you are already expecting in your mind to get. Alright, so that is your leading question. Now इसे कब पूछ सकते हैं? So leading questions may be asked in cross examination. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके section 143 में लिखा हुआ है कि leading, क्योंकि see examination in chief के जो questions होते हैं basically they are introductory in nature. कि आपका नाम क्या है, क्या आपका कोई नाम है, अच्छा आपका नाम क्या है, ठीक है, अच्छा आप क्या करते हो, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, ये नहीं कि अच्छा आप इस कंपनी में काम करते हो. द मोमेंट यू से इस कंपनी में काम कर रहे हो तो मतलब यू आर लीडिंग हिम टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आंसर. सो देयर इज अ डिफरेंस. वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ यू कैन गेट द डिफरेंस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन इन चीफ का क्वेश्चन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन. ऑलराइट, सो सेक्शन 141 आपको ये बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है. लीडिंग क्वेश्चन हम पूछते कहाँ पे हैं? वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं. अब 142 क्या है? लेट्स सी द लास्ट the last section for today. What is 142?
What is section 142? So 142 says that when they must not be asked. When can you now not ask leading question? So leading questions must not, all right, be asked in an examination in chief. जैसे कि मैंने आपको भी बोला, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है, और इन अ री एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछ सकते, ठीक है. सो बट इस सिचुएशन में आप पूछ सकते हो लीडिंग क्वेश्चंस कब? एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगर तो ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्ट ना किया हो या फिर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. ऑलराइट, सो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड टू इन द एग्जामिनेशन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सो इफ द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट ऑब्जेक्टिंग टू योर लीडिंग क्वेश्चन, opposite party is not objecting, the opposite party is not objecting, all right, one thing. Second, you have taken the permission of the court, permission of court, then you can ask leading question. अब कोर्ट कब देती है परमिशन फॉर लीडिंग क्वेश्चन? ये जो है इलैबोरेट किया हुआ है सेकंड पैरा में. कोर्ट कब देगी आपको परमिशन? भाई कोर्ट परमिशन देते वक्त कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन सर्टेन फैक्टर्स. व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच द कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग यू परमिशन फॉर आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन. So the court shall permit leading questions as to matters which are introductory, all right, which are introductory, fine, और undisputed, जिनसे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है. अब पूरे पेपर में छपा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, एवरीथिंग यू नो हैज़ बिन रिटन ओवर देयर आपके बारे में. सो इट इज़ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, all right. Also it is an introductory fact about you, or which have in its opinion been already sufficiently proved. अब पेपर में और हर जगह लिखा हुआ है, there is so much of documentary evidence related to it, so it is already sufficiently proved. So then in all these cases, ठीक है, in all these cases the court will allow to provide leading questions. The court will allow to provide leading questions. All right, clear? Is it clear with everyone? बात समझ में आ रही है? So these are three most important things that you need to remember. पहले कि order and production of examination जो होता है वो कैसे होता है of witnesses, वो होता है, just a second. So वो कैसे होता है? That is according to the law and practice which is being followed in a civil and criminal case. अगर कोई लॉ नहीं है as such तो it will be the discretion of the court. Alright? उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या इसका कोई जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन है? सो 138 139 में हमने देखा है. हमने ये भी देखा है उसमें कि बेसिकली जो है 138 में देखा है, हमने ये भी देखा है उसमें कि बेसिकली व्हाट आर द फैक्ट्स विथ विच आवर क्वेश्चंस ऑन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन कैन डील विथ रेलेवेंट फैक्ट्स. बट क्रॉस एग्जामिनेशन में आप इलैबोरेट कर सकते हो, आप और इलैबोरेट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. इलैबोरेट करते वक्त अगर कोई ऐसा मैटर सामने आता है विच हैज़ नॉट बीन फर्दर टॉक्ड अबाउट, तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो है पार्टी अपने ही विटनेस से री एग्जामिनेशन कर सकती है. उस वक्त अगर कोई न्यू मैटर आता है तो उसका प्रीवियस परमिशन लेके कोर्ट का जो कोर्ट से परमिशन लेके, नॉट प्रीवियस परमिशन, कोर्ट से परमिशन लेके एडवर्स पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है. कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आता है कोर्ट में, सो जस्ट बिकॉज द पर्सन इज प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट वो विटनेस नहीं हो जाता. कहाँ लिखा है? 139 में लिखा है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको विटनेस की तरह बुलाएं. ठीक है, अब किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? सो 141, 142, 143 ये आपको बता रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है. सो लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं?
वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं, कहाँ नहीं पूछते हैं, सो वो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में आप नहीं पूछ सकते, यू कैन नॉट आस्क, बट स्टिल इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन यू कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस where the opposite party has not objected to it, or you know where आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, if someone is asking leading question तो you know the counsel says that you know your lordship or my lord that is a leading question, I object, that is a leading question, all right. तो अगर ऑब्जेक्ट करते हैं तो ठीक है, पर अगर वकील साहब को पता ही नहीं चलता है कि नो दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऑलराइट, और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट द लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन ऑल्सो. अब परमिशन कोर्ट किस ग्राउंड पे देती है कि अगर तो वो फैक्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी इन नेचर है, बेसिक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी सब्जेक्ट मैटर को, किसी इंसान को, उसके नाम के बारे में, उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में, ऑलराइट, और या फिर वो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर वो सफिशिएंटली प्रूव्ड है, देयर इज अ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, सो वहाँ पे भी कोर्ट जो है वो परमिशन प्रोवाइड कर सकती है, राइट. So I hope you people have understood. If you have liked it, please, you know, like and subscribe and share it with your friends, and do hit the bell icon so that you get further notified. So this is all from my side on this topic in short. Alright, if you have any questions, you can just write those questions in your comment box and that will be taken care of. Besides that, I'll be meeting with you with another topic, alright, very soon. So thank you so much all of you. Thank you for watching. Take care. God bless. Good night.